Hello learners, welcome to the channel. In this video we'll talk about cell. Before moving further, first of all we should know what is a cell. So let's start with basic introduction of cell. सेल होती क्या है? सेल स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होती है लिविंग बींग्स की. So cell is the structural, functional and biological unit of all living beings. Now साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सेल के बारे में पढ़ते हैं वो होती है साइटोलॉजी. सो साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल. नाउ ए सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, मीन्स सेल के पास खुद को रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी होती है. हेंस दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. अब सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज ए ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन एंड ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम that lead to formation of a organism. So we can say cell is the building block of life. Cell is the smallest unit of life. Cell क्या होती है? सबसे smallest unit होती है life की. As we can say a tissue is formed by a group of cell. Now who discovered cell? The cell was first discovered and named by Robert Hooke in 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम एक सेल को डिस्कवर किया. ही डिस्कवर्ड ए डेड सेल एंड ऑब्जर्व्ड इट इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक कॉर्क स्लाइस के अंदर फर्स्ट टाइम डेड सेल को डिस्कवर किया अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू. बट व्हेन वी आस्क्ड अबाउट हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, देन आवर आंसर विल बी एंटोन वॉन लीवेनहुक. ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल फर्स्ट टाइम एंड रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल and Robert Brown discovered nucleus of cell. So these were some scientists which are important types of cell. So moving further, basically there are two types of cell: prokaryotic cell and eukaryotic cells. So let's differentiate among them. Prokaryotic cells are always unicellular, but eukaryotic cell may be unicellular and they also may be multicellular. Prokaryotic cells are small in size, but eukaryotic cells are larger in size. Nucleus is absent in prokaryotic cell while nucleus is present in eukaryotic cell. They are primitive cells, means prokaryotic cells are primitive while eukaryotic cells are advanced in nature. Membrane bounded organelles are absent in prokaryotic cells while present in eukaryotic cells. Mitochondria is absent in prokaryotic cell but it is present in eukaryotic cell. Cell division occurs only through mitosis in prokaryotic cells, but in eukaryotic cell division occur by mitosis and meiosis both. Example of prokaryotic cell is bacteria such as E. coli, lactobacillus, and eukaryotic cell examples are animal cell, plant cell. Now moving further, let's talk about components of cell. Cell के क्या क्या components होते हैं? Cell have different components such as cell boundary, cytoplasma and nucleus. Now cell boundary contains cell wall, cell membrane and glycocalyx and capsule.
Keep in mind that glycocalyx or capsule is only present in bacteria. Cytoplasm is categorized into two parts: cytoplasmic organelles and cytoplasmic inclusion. Cytoplasmic inclusion, in which liquid part is present, which contains water, salt, carbohydrates, ions, fats, etc. But cytoplasmic organelles are of two types: membrane cytoplasmic organelles and non-membrane cytoplasmic organelles. First, we will talk about membrane cytoplasmic organelles. Membrane cytoplasmic organelles are also categorized into two categories: double membrane cytoplasmic organelles and single membrane cytoplasmic organelles. मीन्स जिन ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक वो ऑर्गेनल्स जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है और एक वो ऑर्गेनल जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड. These two have double membrane on these organelles, while endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, vacuole, these have single membrane, or they are single membrane cytoplasmic organelles. And non-membrane cytoplasmic organelles are ribosome, centrioles, cilia, and flagella. So we discussed here what are the components of cell. That's all for this video. We'll talk about these components of cell broadly in next video. So thank you for watching this video.